So this is the question number 31 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, four statements have been given to you and has been asked out of the given four option which one will be the correct output of this code. So in order to answer this one, first of all we need to be aware regarding the insert function in Python. ओके, तो अगर मैं बात करूं इंसर्ट फंक्शन की, ये क्या करता है आपका एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कर रहा है एलिमेंट को ऐड कर रहा है. सो इट्स सिंटैक्स इज लाइक दिस. इसके अंदर दो पैरामीटर हैं आपके. फर्स्ट वन इज इंडेक्स, अनदर वन इज डाटा ऑब्जेक्ट. यानी कि किस इंडेक्स पे आपको वैल्यू ऐड करनी है और क्या उस कौन सा डाटा आपको ऐड करना है. जिस इंडेक्स पे आप वैल्यू ऐड करोगे उसके बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, राइट शिफ्ट हो जाएंगे. Now coming back to our question, let me do the line numbering first, then we will proceed further. 1, 2, 3 and 4. So the first line have एक list given है आपको, उसके अंदर कुछ elements है, 5 elements 10, 15, 20, 25 and 30. Second line says at index number 3 we need to add 4. तो अगर मैं इसकी indexing करूं 0, 1, 2, 3, 4. So what we are saying कि index number 3 what we need to add 4. So now right what will happen, this will become index number 3, this will become index number 4 and this will become index number 5. So after line number 2 what will be the content of the list 1, it would be 10, 15, 20, 4, 25 and 30. Now the indexing will be changed, it would be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Now at line number 3 what we need to do, at index number 2 we need to add value 3. So now in before 20 we will need to add value 3. So what will be the output of the list in this case, 0, 3, 20, 4, 25 and 30. If you observe what is actually happening, we are shifting the elements to the right. जो एलिमेंट्स पहले क्या थे उनको क्या कर रहे हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं. नाउ इंडेक्सिंग 2 पे क्या आ गई आपकी वैल्यू 3. ओके, नाउ वी नीड टू से कि लिस्ट 1 ऑफ 5 का एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी. दैट मीन्स वी नीड टू डू नेगेटिव इंडेक्सिंग. तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. So which element we have at index number -5 is 3. So the right answer would be option number B, which is 3. If you run this code in the Python ID, you will see output is 3 as well. Okay. I hope this question gives you a little bit clarity regarding the insert function in Python. If you have any doubt regarding this question, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. Thank you for your time.